Good evening, children. As per you have said that you want to do chapter number 2 of civics, that is the salient features of the constitution. So we are going to do this particular chapter. Now children, you all are knowing that certain topics are there which we have to study. First is single citizenship. The second point is universal adult franchise. Third point is fundamental rights, and the fourth one is fundamental duties. So now let's move to the first point. Now, before introducing the chapter, I would like to tell you the meaning of fundamental rights. What's the meaning of fundamental rights? Rights are those essential conditions of life without which no one can lead a full, happy, and purposeful life. Rights are necessary for the very sustenance of a democracy. Therefore, every democratic country pays special attention to secure essential freedoms for its people. Fundamental rights are enshrined in part 3. Where they are mentioned? They are mentioned in part 3 of the Indian Constitution. These rights are called fundamental because they are guaranteed by the Constitution, and also because they are guaranteed the basic rights essential for the development of an individual. These rights are necessary to preserve human dignity and promote social progress in the atmosphere of freedom. Now children, let's talk about the main term, that is single citizenship. What is this single citizenship? ये क्या चीज़ होती है single citizenship? In the Indian Constitution, we get the term of single citizenship. देखो, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जितने भी भारतीय हैं, that all Indians, irrespective of their caste, color, creed, sex or religion, are the domicile citizens of India. किसी भी जाति के, किसी भी रंग, वो जहाँ के भी हैं, अगर वो भारत में वास करते हैं, भारत में रहते हैं, तो वो भारत की उनको नागरिकता प्राप्त है. और यही जो सिस्टम है, कुछ देशों में ये नहीं है, जैसे कि अमेरिका. क्योंकि अमेरिका में वन कैन बी अ सिटीजन ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट एज वेल एज एन अमेरिकन सिटीजन. देखो, हमारे यहाँ पे क्या है कि आप गुजरात में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है. आपका एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड हर जगह काम करता है. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है. आप न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जाते हो, एक प्लेसेस चेंज करते हैं, तो आपको अलग अलग सिटीजनशिप होनी चाहिए. और दूसरी खासियत, आपका जन्म चाहे पंजाब में हुआ हो, चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़, आप अपने आप को इंडियन कहेंगे. सिंपली you will say that you are a citizen of India. You will not say that you are a citizen of Uttar Pradesh. Simple. So that's why we are having the concept of single citizenship. This has been done. अब इसको किया क्यों गया है? This has been done to ward off separate tendencies and promote fraternity and unity among the people. ये इसलिए कंसेप्ट स्टार्ट किया गया कि सब लोग अगर अपने आप को एक मानते हैं, एक देश का मानते हैं, सिंगल सिटीजनशिप अगर सबके पास है, तो ऑल द पीपल विल बी लिविंग इन अ यूनाइटेड मैनर. अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए कि सब स्टेट की अलग अलग नागरिकता होगी, तो क्या होगा? देन द पीपल वोंट बी हैविंग गुड काइंड ऑफ रिलेशंस. इसके बाद एक हम लोग का एक अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, अमेंडमेंट एक्ट. उसमें गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड ड्यूअल सिटीजनशिप to all the persons of Indian origin who migrated to other countries
आफ्टर जनवरी 26 1950, क्योंकि उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आ गया था. ऑल प्रिविलेजेस ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स एक्सेप्ट द राइट टू वोट कुड बी इंजॉयड बाय द PIOs. तो जितने भी हमारे सिटीजन्स होते हैं जो 1950, 1950, 1955 के दूसरे देशों में बस गए थे, वो अगर भारत आते भी हैं तो उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा. समझना, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है. बाकी राइट्स दे कैन एंजॉय द अदर राइट्स, बट दे कैन नॉट एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स. मीन्स दे एक्सेप्ट वोटिंग, दे कैन एंजॉय ऑल द फंडामेंटल राइट्स. सिर्फ वो चुनावों में अपना मतदान नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा उनके पास सारी सुविधाएं होंगी. Now, the next point, universal adult franchise. And next point is universal adult franchise. अभी क्या चीज़ होती है? सिंपल सा, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो हम लोग के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल पर्सन्स, जो भी लोग जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, all the people those who are of 18 years of age and above, उनके पास अपना वोट डालने का हक है. और while they are going to vote, there is no kind of discrimination on the basis of their caste, color, religion, etc. वो किसी भी जाति के, किसी भी रंग के, कुछ भी हो, वो जाके अपना वोट डाल सकते हैं. जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिश हैड प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल इलेक्टोरेट्स अंडर द एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935. जब ब्रिटिशर्स, while the Britishers were ruling over India, they played the game of communal electorates or separate electorates. Anyone knows the meaning of this communal or separate electorate? Can anyone tell me? Arnav, Shubhi, Charu, Aditi, Janvi, Nikhil, anyone? What is separate electorate or communal electorate? Now, I tell you the difference. See, during the time when Britishers were in India, they started a separate electorate. अब इस separate electorate होता क्या था? Just for example, if I talk about Lucknow, in Lucknow, for example, if the population is 10 lakh, population is 10 lakh, and out of that 6 lakh people are of Islam religion. अब उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी कास्ट मेजॉरिटी में है, जो भी मेजॉरिटी में जाति या धर्म है, उन लोगों के पास वोट डालने का हक होगा, और चुनाव जो लड़ेगा वो सिर्फ उसी रिलीजन से इंसान लड़ पाएगा. जैसे इस्लाम धर्म से ही कोई चुनाव लड़ेगा और उसको वोट डालने वाले सिर्फ इस्लाम धर्म वाले ही होंगे. तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें जीतेगा कौन? इसमें वही जीतेगा जो चुनाव लड़ाता, मीन्स इस्लाम रिलीजन वाला जीत जाएगा. अब ये ब्रिटिशर्स ने ये टेक्निक अप्लाई की थी, इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. अब सोचो कि जिस जगह से जो भी सेलेक्ट होके आया है, जिस भी धर्म का नेता सेलेक्ट होके आया है, वो डेवलपमेंट के लिए वो उन्हीं लोगों की तरक्की करेगा जो उसके जाति के हैं, जो उसके धर्म को बिलोंग करते हैं. फॉर द अदर्स ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प आउट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ टेकन प्लेस. अच्छा, जब भारत का संविधान बना, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया बना, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूसिंग जॉइंट इलेक्टोरेट. तब हमारे भारत में बन गया था जॉइंट इलेक्टोरेट. अब इसका मतलब क्या होता है? जॉइंट इलेक्टोरेट का सीधा मतलब हो गया, चुनाव के समय किसी भी जाति का इंसान, जनरल, SC, ST, OBC, एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, वो चुनाव लड़ सकता है. एंड ऑल द नेटिव्स ऑफ दैट एरिया, जितने भी लोग वहाँ के नागरिक हैं, उन सब के पास राइट है अपना वोट डालने का. जिसको चाहें वो अपना वोट डाल सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. अंग्रेजों ने, वाई द ब्रिटिशर्स हैव अप्लाइड दिस टेक्निक? द ब्रिटिशर्स हैव अप्लाइड दिस टेक्निक बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ वेज बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का तरीका था ये. और आज हम लोग का क्या है, संविधान जब बन गया उसमें नियम क्या था कि हम लोग को वी हैव टू गेट यूनाइटेड. सो दैट्स व्हाई द सिस्टम इज प्रिवेलिंग.
After this, now the other point is, similarly, some seats are reserved for candidates from scheduled caste and scheduled tribes. जितने भी लोग होते हैं, all the people from such constituencies have to vote for the candidates of the area. अच्छा, जितने भी लोग होते हैं, किसी भी कास्ट का इंसान चुनाव लड़ ले, सब लोग जाके अपना वोट उसको डालते हैं. All the people cast their votes to that person whosoever is contesting. Now one question, children. जैसे मान लो जो जनरल सीट होती है, आई नीड द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. मान लो कि लखनऊ जो है वो जनरल सीट है. क्या यहाँ से दूसरे कास्ट का लोअर SC ST या OBC चुनाव लड़ सकता है या नहीं? My question is, if the Lucknow seat is of a general category, can the person of SC ST OBC can contest the elections or not? Just think and tell. Okay, I tell you the concept of this. Concept of this is कि अगर ये जनरल सीट है, इफ दिस इज अ जनरल सीट, तो यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह SC वाला हो, चाहे ST हो, चाहे OBC है. लेकिन अगर वो जनरल सीट नहीं है, मान लो कोई सीट रिजर्व हो जाती है SC के लिए, तो वहाँ से चुनाव जो होगा वो SC कैंडिडेट ही लड़ेगा, वहाँ पे जनरल वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है. That is the point. Now, let's talk about fundamental rights. What's the definition of this fundamental right? What's the definition of fundamental rights? Fundamental rights, in simple terms, if I say, these are the rights which are essential for the all-round development of a person. और ये कहाँ पे mention किया गया हमारा fundamental rights? These fundamental rights are mentioned in Part 3 of the Indian Constitution. ये हमारे Part 3 में दिया गया है. Now, if I talk about the fundamental rights, so total there are 7. The first one is right to equality. The second one is right to freedom. The third one is the right against exploitation. The fourth one is the freedom of religion. The fifth one, the cultural and educational rights. The next one is the right to constitutional remedies. And the next one is right to education. और जो ये right to education है, that was added in the year 2002. राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में. दीज आर द पॉइंट्स. सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. क्या होता है ये राइट टू इक्वालिटी? व्हाट इज दिस राइट टू इक्वालिटी? इफ आई टेल यू अबाउट राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट थ्रू द फ्यूडल सिस्टम and then by the British rule, a class of so-called high ups was created in India. The old age caste system had caused the evil of untouchability in the Indian social life. Right to equality seeks to undo these wrongs. अब सीधा राइट टू इक्वालिटी का मतलब था, देखो भारत में अंग्रेजों ने रूल किया, अंग्रेजों से पहले मुगल्स ने रूल किया, तो जो जो आता गया उन्होंने अपने हिसाब से ये लोग नियम को बदलते गए. जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज सिर्फ अपने को इम्पोर्टेंस देते थे, उनके हिसाब से लॉ होता था. दे वर सुपीरियर टू इंडियंस. उनका स्टेटमेंट होता था दैट द ब्रिटिशर्स आर बाय बर्थ द सुपीरियर्स एंड द इंडियंस आर बाय बर्थ द इंफीरियर्स. और रंग की राजनीति थी, मतलब अगर आप गोरे हैं तब तो आपको राइट्स मिलेंगे, देन ओनली यू कैन एंजॉय द राइट्स. इफ यू आर ए क्रिश्चियन then you are eligible for all the rights, but if you are an Indian
then you are not eligible for all these rights. So such kind of philosophy was there. So if I talk about in right to equality, 4 points come. इसमें हमारे जो मेन चीज़ें होंगे, equality before law, equality of opportunity, abolition of untouchability and abolition of titles. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, that is article number 14. This article number 14 is equality before law. Article 14 establishes equality before law and equality in protection by law irrespective of caste, status, creed, religion, sex और color. सीधा से इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ है, लॉ का मतलब हमारा नियम, अगर कोई नियम है तो दैट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल. अगर आप रोडवेज में अगर बैरियर्स को स्टॉप करते हैं, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ते हैं, तो जो पनिशमेंट दूसरों के लिए है वो सबके लिए सेम पनिशमेंट है. ट्रैफिक पुलिस ये नहीं देखेगी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप रिच हैं, पुअर हैं. The law is going to remain the same. If you commit a crime, then the punishment for that is going to remain the same for each and every person. So that comes in Article 14. अब ये ऐसा क्यों बनाया गया? The answer for this question is because during the time of the Britishers, such kind of equality system was not prevailing. If the Britisher does anything, then it's not wrong. But if the Indian does the same thing, then it's totally wrong. For that, the Indian is going to be punished. So that's why this right to equality was being brought. After that, the second one is Article 15. Now, what is this Article 15? This Article 15, it totally prohibits, this Article 15 totally prohibits any sort of discrimination among the citizens of the Republic on all or any of the grounds mentioned in Article 14 as stated above. This provision does not prevent any state or central government from making provisions for the upliftment of economically, socially or educational backward sections of the society. Moreover, residence in a particular state cannot be made a condition for appointment to a particular job under the government. देखो सीधा से इसमें कंडीशन क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द रिपब्लिक. इट सिंपली मीन्स कि ऑल द पीपल, किसी भी जगह पे आप एडमिशन ले सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप यू हैव टेकन बर्थ इन यूपी देन यू विल बी गेटिंग द एडमिशन फॉर योर एजुकेशन इन यूपी ओनली. आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शॉप्स होते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 there should be no discrimination made for the allotment of shops or for admission to educational institutions. आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, in your class only you can see that people of different category means SC, ST, OBC, all kind of people are coming in that class. There is no kind of reservation fixed for that. So that is equality of opportunity. The next point is, that is Article 16. Okay. That article is, we have talked about two articles, Article 14, we have talked about Article 15, and now Article number 16, equality of opportunity. Now, what is this equality of opportunity? Equality of opportunity in all fields of public life is guaranteed by Article 16 of the Constitution. No individual can be discriminated against on grounds of caste, religion, sect, race, sex or place of birth
in public appointments. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जब जॉब्स निकलती हैं तो उसमें कोई भी इंसान मतलब a person from any of the state can fill the form. He or she can be selected. वो किसी भी स्टेट का हो सकता है. So there is no discrimination that you don't belong to this state, so there is no vacancy for you. That is not the criteria. However, this article does not restrict the reservation of posts for the scheduled caste and the scheduled tribe. लेकिन वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जो पोस्ट निकलती हैं सब SC के लिए अलग निकलती है, ST के लिए अलग निकलती है. फॉर जनरल इट इज़ डिफरेंट. सो this article does not restrict the reservation of the posts of the scheduled caste and the scheduled tribes. Now my next point is Article 17, and this is abolition of untouchability. Untouchability का मतलब क्या होता है? अछूत वाला जिसे हम लोग कहते थे. पहले हम लोग अछूत मान के कुछ लोगों को अपने यहाँ आने नहीं देते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस, ईयर्स बैक. जो छुआछूत का था या जो लोअर कास्ट अपर कास्ट का खेल था, दैट वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया. सो आफ्टर दैट आर्टिकल 17 वॉज इंट्रोड्यूस्ड. आर्टिकल 17 हैज virtually erased the age-old slur on the face of Indian social order, that is abolition of untouchability. अब ये जो पहले की तरह की तुम अपर कास्ट के हो, मैं लोअर कास्ट का हूँ, ये सिस्टम हट चुका है. Now all the castes are equivalent. All the castes are equal. And if you make any kind of discrimination on the basis of your caste, मान लो कोई अपर कास्ट का है, वो लोअर कास्ट को टॉर्चर कर रहा है, तो on that person so many strict laws have been made. For example, Harijan Act. One word I am using, Harijan Act. This word Harijan was used for whom? Can anyone tell me? This Harijan word was used for whom? For which category of people? Charu, Arnav, Aditi, tell me the answer, children. This particular word was introduced by Mahatma Gandhi. Harijan. Hari means God. Hari means God. And Jan means creation of God. So now earlier to the lower caste, different titles were being used. But now all these titles have been removed and only the word Harijan is used. Just for removing this process, yes, very correct, Charu, your answer is right, by Gandhiji. So just for the removal of untouchability, such kind of changes were envisaged in our constitution. Now, after that, Article 18. Now, what is this Article 18? This Article 18 means, this article puts an end to all the titles like Rai Sahab, Khan Bahadur, Sardar Bahadur, etc. देखो नाम से ही पता चलता है, नाम से ही लग रहा है कोई बहुत बड़े हैं. खान बहादुर, राय साहब, नाम से ही लोग बड़े लगने लगते हैं. So this article prohibits the state from awarding such titles. This has been done because अगर ऐसे टाइटल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, so this title goes against the spirit of equality. Only military, याद रखना, only two fields are there. Only military and academic degrees can be conferred. So now let's move to the next point. My next point is right to freedom. देखो right to freedom जो है, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. So many things are coming. So what is this right to freedom? This right to freedom covers Article 19 to 22. So let's talk about various kinds of individual and collective freedoms have been guaranteed to the citizens of the Republic of India
under Article 19 to 22 of the Constitution. Although the freedom guaranteed under these articles are regulated through restrictions for the sake of public interest and safety of the state, yet they go a long way in making India a really democratic polity. देखो डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं बट सो मेनी फील्ड्स आर देयर. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो सो मेनी थिंग्स वर देयर विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड while framing the constitution, because in India we are having a variety of caste and communities. जितने की दूसरे देशों में भगवान होते हैं उतनी वेराइटीज़ के हमारे यहाँ जाति और धर्म पाए जाते हैं. The right to freedom, Article 19 is actually a cluster of several rights. जो हमारे right to freedom है Article 19, that is a cluster. Cluster means it's a combination. Yes. Okay, this is a cluster. Cluster means combination of several rights guaranteed under the right to freedom. The first one is freedom of speech and expression. The second one is freedom to assemble peacefully without arms. Next is freedom to form associations and unions. Can anyone tell me any of the associations or unions? As children, can any one of you tell me the name of any association or any union? Now I tell you about this. The point is, you would have heard NRMU. NRMU. This is Northern Railway Mazdoor Union. This is a union of those people, those who are the employees in railway department. अब इनका यूनियन बनाने के पीछे क्या मतलब है? अगर मजदूरों को या जो उसके वर्कर्स हैं उनको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो जो भी NRMU का हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, they convey their problems to the president and the president conveys the problem of the union to the railway department or to the ministers. So that is the use. In the same manner, we are having NSUI. It stands for National Students Union of India. उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. NSUI और ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. जो भी आपने सुना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये अध्यक्ष हैं, ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट, तो ये लोग होते हैं. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट टू फ्रीडम इज द हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड ओपन सोसाइटी. विदाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, डेमोक्रेसी बिकम्स मीनिंगलेस. तब हम लोग कोई कुछ भी नहीं हो सकता अगर हमारे पास फ्रीडम ना हो. सोचो, इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन हाउ विल यू एबल टू सर्वाइव? देन आई वुड सिंपली से एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस डेमोक्रेसी बिकम्स मीनिंगलेस. द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स enabled people to gather peacefully without disturbing the peace and going against the laws of the land. छुट्टी होती है या इंटरवल होता है, देखो तुम लोग कैसे ग्रुपिंग कर लेते हो. छुट्टी में यू आर हैविंग द बेसिकल्स और योर व्हीकल्स, बट देन ऑल्सो यू गो विद योर टीम ओनली. सब इकट्ठे हो जाओगे, फर्स्टली यू विल मेक द डिस्कशंस, देन यू मूव आउट. सिमिलरली द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस इज इनहेरेंट इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. Without this, no political party, trade union, etc. can be formed. The right to move freely gives the freedom to go anywhere in the country. देखो हमारे पास right to freedom होता है, हम लोग देश के अपने किसी भी भाग में जा सकते हैं. आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं, ठंडियों की छुट्टी में कहीं घूमने जाते हैं. जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिस में हैं उनके ट्रांसफ़र होते हैं, कभी लखनऊ में हैं, कभी दिल्ली चले गए, मतलब दे आर हैविंग द ट्रांसफ़र सिस्टम.
So the freedom to settle in any part of India and the freedom to practice any profession of trade are rights that are essential for the development and welfare of individuals. Listen to my point. Freedom to practice any profession. What does it mean? It's not necessary that if your father is a doctor, you should also become a doctor. If you want to become engineer, if you want to become a software one, you can become. सो अर्लियर व्हाट वाज देयर कि पहले जो होता था सब खानदानी होता था. आई एम टॉकिंग ईयर्स बैक, 100-150 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि फादर डॉक्टर है, घर पे एक डॉक्टर है तो सभी डॉक्टर ही होंगे, एक वैद्य है तो सब वैद्य होंगे. तो दैट वाज नॉट द सिस्टम. एट प्रेजेंट टाइम देयर इज नो सच काइंड ऑफ सिस्टम. हमारे मन में जो होता है, वट एवर यू वॉन्ट, यू आर फ्री टू बिकम दैट. But such profession should not be detrimental to public interest or moral ethics of the society. That is, traffic in women and children, smuggling, etc. cannot be allowed. You are having the right to freedom of profession. But it doesn't mean कि you are moving on the right track. कोई पूछे क्या बनना चाहते हो तो कह दो कि हम तो हैकर बनना है. तो that's not a legal thing. For this, the government is not going to support you. On the part, you are going to be punished by the government if you commit such kind of things. Okay. Next point is, but there are certain, I hope so that this point is clear. Now, if I talk about limitations, our fundamental rights or our freedom can be blocked also. Right to freedom can be blocked also under the conditions of emergency. Our fundamental rights are not absolute. They are the laws of parliament, protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty, protection against arrest and detention. So many fields are there where there are limitations on our fundamental rights. हमारे पास घूमने की आज़ादी है, अपने हिसाब से आप जो चाहें कर सकते हैं, but it doesn't mean that you are harming the fundamental rights of the other people. आप बहुत खुश हो, आपका रिजल्ट निकला है, बहुत खुश हो, आपके 95-97% आ गए, you are feeling very happy. It doesn't mean that you will go and disturb the other person. Just for example, किसी के यहाँ डेथ हुई और आप उसमें अपना रिपोर्ट कार्ड और मिठाई लेके पहुँच गए, लीजिए खाइए जी, खुश रहिए. So these are not the terms. Yes, Charu, there are legal hackers of the government, but they can be in the government sector only. They can be in the government sector only. If you open a cyber cafe and you start hacking, then it is going to be a great problem. Okay, so if you say, then we should move to the question answers. We should move to the quiz. If you all are ready, send your yes or no. Yes, children. Others, Janvi, Arnav, Aditi, where are you? Nikhil Gupta. Okay, so now I am moving to the first question. My first question is, in this you have to write your two or three line answer. Okay, so the first question is, what is considered the core of the Indian Constitution? What is considered the core of the Indian Constitution? Yes, children, now tell the answer for this question.
Anyone knows this answer or not? So now I am telling you the answer of this question. It appears that nobody is knowing the answer. The answer is the core of the Indian Constitution. Now I am telling you the answer. Janvi, listen it carefully. The core of the Indian Constitution lies in part 3 that relates to the fundamental rights. It is a kind of short question and the answer is part 3. Now the next question. Define the term rights. Next question is, it will be on your screen. Tell the answer. Yes, children, start typing the answer. Define the term rights. Janvi, Charu, Shubhi, Aditi, Nikhil, type it fast. So, no one. Now, I am telling you the answer. Yes, Janvi Yadav has sent the answer. Rights are the legal, social or ethical principles of freedom. A moral or legal entitlement to have or do something. Okay, correct. The answer is correct. But I am just going to change your words. The words are, rights are those freedoms which are essential for personal and common good and are guaranteed by the government. Yes, correct answer, Charu, Aditi, Janvi, your answer is correct. So the answer could be viewed. You can read the answer. Again, I am reading the answer. Rights are those freedoms which are essential for personal and common good and are guaranteed by the government. Now the next question. The next question is, define the term fundamental rights. It would be on your screen soon. Yes, think and then type. This is the easy question. Write the answer.
Yes, Aditi, Charu, send the answer fast, children. Type it fast. Shubhi Yadav has sent the answer. Good. Aditi also. Yes, Arnav. Good. The answer is right. Yes, correct answer. See, your answers are totally right. All those who have sent, Charu, Aditi, Shubhi, Arnav, answer is correct. But I'll just try to manipulate the words. Okay. Fundamental rights are the conditions which are recognized as the primary requirement for the balanced development of a person. This is one definition. The other definition is fundamental rights are the basic rights which are needed for the all round development of a person. Now listen to my statement. If I ask you what is the meaning of the term fundamental rights, what you will tell? You will say certain rights are fundamental because they are included in the fundamental law of the land, the constitution, and can be enforced by the courts. So you can see the answer on your screen. Now the next question. It is going to be soon visible. The question is, how do the fundamental rights act as a check on the arbitrary conduct of the state? This is a bit difficult question. I want all the talented ones to give the answer for this question. The question is bit tough. Yes, children, type your answer fast. My question is, how do the fundamental rights act as a check on the arbitrary conduct of the state? Now the question is clear, Arnav? Now, let me tell you the answer. All are getting worried. Now I should tell you the answer. Fundamental rights can be altered or curtailed only by an amendment of the Constitution. हम लोग fundamental rights में okay,
देखो जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें हम लोग अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं. Fundamental rights can be altered or curtailed only by an amendment of the Constitution. However, the basic structure of the Constitution cannot be amended. Thus, their inclusion in the Constitution is a check not only on the executive but also on the parliament and other legislative bodies. Yes. Now the other point is why this thing is there. Because if this power goes of changing in the constitution to all the government, different sectors of the government, the state or the center, then it will become too difficult for the people to survive. Means different states would be having different fundamental rights, whereas nowadays in India we are having only one system, that is the fundamental rights throughout India are the same ones. Now one more question, again the answer is like this only. How do the fundamental rights reveal the fundamental unity of India? This question is also a bit difficult. How do the fundamental rights reveal the fundamental unity of India? Now let me tell you the answer. The answer for this question is the fundamental rights emphasize the fundamental unity of India. All the citizens have the same liberties and the facilities irrespective of wealth or social status, race or caste, sex or place of birth or any of them. मीन्स भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सेम तरह के फंडामेंटल यूनाइटेड रहते हैं, अलग अलग जगहों के होके भी वो एकजुट रहते हैं. You can see the example in defense, in our parliament or in any of the sectors. So children, for today this much only. The remaining part would be done in the